let me quickly introduce my high-powered panel from Kashi itself. मैं स्वागत करना चाहूंगी जावेद अहमद साहब का from the बसपा BSP, one of the principal opposition here. सभी लोग आप तालियां बजा सकते हैं और इनका स्वागत कर सकते हैं हमारे पैनलिस्ट का. कांग्रेस से हमारे साथ है संजीव सिंह representing कांग्रेस पार्टी. Also from the ruling dispensation from the BJP, देवानंद सिंह, आपका भी स्वागत है. And political analyst Abhijit Singh, who is going to help me take this discussion forward and ask very pertinent questions to all of them. Thank you very much for joining us. And before we actually start talking about the real issues that are going to hold the maximum sway, and the alternate narrative, that is it a contest at all? Because many experts believe that it's no contest for obvious reasons. We're going to talk about that, but before that, me and my team spent some 72 hours absorbing every bit, every nook and corner of this beautiful Kashi, which is steeped in history, steeped in tradition, steeped in legacy. It also used to be called the cultural capital of India. It has also been looked up as the highest seat of knowledge and much more. You name it, and Varanasi has the answer. This is a special report bringing to you the life, the vibe, the colors of a very, very special Kashi of India. In the heart and the banks of mighty river Ganga, tracking the pulse of the pole-bound Banaras. Varanasi or Kashi, one of the oldest living cities in the world. Varanasi is one of the most prestigious seats that is going to be polled on 1st of June. This is one constituency that has seen a massive transformation from the symbol of faith to massive development. Think of Banaras or Kashi or Varanasi, the first thing or the foremost thing that would come to your mind are the famous, beautiful, picturesque ghats of Banaras. Banaras के घाट वाराणसी की शान है. अब घाट क्या था, क्या से क्या बन गया. नमो घाट नहीं था, नमो घाट नया बन गया. काफी बदलाव आया है. 2014 के बाद काफी बदलाव आया है. जो 2014 के पहले नहीं था, और 2014 के काफी लोग सुधार आ गया है. यहाँ पे भी पूरे भारत में आ गया है सुधार. Political heat is hotting up in Varanasi, and so are the temperatures. Team Pulse reporting from Kashi Vishwanath corridor, which has not only garnered tremendous national attention, especially when it comes to spiritual tourism, when it comes to pilgrimage, but also international tourists as well. 2 साल में काफ़ी चेंज हुआ, 3 साल में काफ़ी चेंज हुआ है. बहुत अच्छा हो गया. आने वाले टाइम में अब उससे भी अच्छा हो जाएगा. चुनाव में वोट करना बहुत ज़रूरी है. मैं वाराणसी की जनता से ये कहना चाहूँगी कि हर कोई व्यक्ति घर से निकल करके वोट करे. बहुत से बदलाव हुई हैं. पब्लिक के लिए सुविधा हुआ है. सड़क बनी है, हर कार्य अंदर कॉरिडोर बनी है. अब उतना भीड़ नहीं लगता है. अंदर बहुत सुविधा हुआ है. बहुत प्रभाव पड़ा है. पहले से बहुत बढ़िया चल रहा है. सब कुछ सही है. People here are openly talking about the big change on ground, especially when it comes to the development. It is very, very famous for Banarasi textiles, Banarasi saris, and anyone who comes to Banaras has to do some shopping of Banarasi saris. Banaras is also known for its Banarsi Pan. I'm going to relish this
Let's meet up on also to beat the heat of Banaras here. It's extreme heat wave conditions, and as I enjoy my pan, let's also talk to the Panditji here, who is the owner. वो तो अपना नैतिक अधिकार है और उसको जो तुम जरूरी है जो तुम वोट करना हर व्यक्ति को करना चाहिए। Sitting under more than 100 years old peepal tree here in Ruia Hostel in the heart of the world famous Banaras Hindu University. BHU में क्या चल रहा है आजकल? जब किसी भी देश में या किसी भी शहर में जब पर्यटन बढ़ेगा तो वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनका भी विकास होता है। 2014 के बाद लगातार विकास हुए हैं, चाहे आप यहाँ शहर के चारों तरफ पूरा सर्कल वाइज रिंग रोड का निर्माण कराया गया है और यहाँ से जाने के लिए जितने भी मशहूर जो भी बड़े शहर हैं वहाँ जाने के लिए डायरेक्ट हाईवे की सड़कें बनवाई गई हैं। अपने काशी में हमने देखा कि कैंसर का भी अस्पताल बना। In the last 1 decade, Kashi or Varanasi has seen tremendous change in terms of development, and particularly the tourist footfall, the economic parameters have increased multifold. With camera person Murli, this is Sakal Bhatt reporting from Banaras Hindu University in Kashi for DD India. And as we deep dive into this discussion, on your screens are big talking points that we are going to analyze. Question number 1, electoral battle of Varanasi. Do you think the electoral battle of Varanasi, does it reverberate across the broader national political spectrum? Question number 2, the political dynamics of Kashi. Many experts believe that they mirror the broader trends prevalent in Uttar Pradesh.